Good morning, my dear student. I am Dr. Kiran Ramrao Borkar. Now today I am going to discuss about the enzyme. First of all, you can see the structure of enzyme. Okay, this one is the enzyme, and this site is the active site of enzyme, where substrate bind. Okay, so first of all, I just tell you about the enzymes. This enzyme are found in every plant and animal. हर प्लांट में और एनिमल्स में हमको क्या दिखते हैं? एंजाइम्स दिखते हैं. एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एंजाइम फॉर इट्स फंक्शनिंग. हर किसी ऑर्गेनिज्म में हमको एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और वो किस लिए? उसके फंक्शनिंग के लिए. All living beings are controlled by chemical reactions and chemical reaction that are involved in growth. Chemical reactions कहाँ पे होता है? Growth, blood coagulation, healing, combating disease, breathing, digestion, reproduction and everything else are catalyzed by enzyme. हर एक रिएक्शंस को कौन कैटलाइज करता है? एंजाइम्स करता है. कौन उनकी स्पीड बढ़ाता है? एंजाइम्स बढ़ाता है. ओके, सो आवर बॉडी कंटेन अबाउट 3000 एंजाइम दैट आर कॉन्स्टेंटली रीजनरेटिंग, रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस. हमको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. All proteins are not enzyme. Every cell synthesizes its own enzyme with the help of gene. हर एक जो सेल रहती है उसमें क्या बनता है? एंजाइम्स बनता है, लेकिन किसके सारे? विद द हेल्प ऑफ देयर जीन. एंड द एंजाइम्स विच प्रोड्यूस विद इन द सेल इन वेरियस ऑर्गेनल्स. एक बात ध्यान में रखो कि ये जो एंजाइम्स रहते हैं वो सेल में तो बनते हैं लेकिन सेल के ऑर्गेनल्स में तैयार होते हैं. तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स? जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस, जस्ट लाइक अ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम. इट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ एंडो एंजाइम. And those which act away from the site of synthesis, और जो enzymes जहाँ पे बनते वहाँ पे नहीं तो बाहर एक्ट होते हैं. ओके, तो उस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एक्सो एंजाइम्स. ओके, सो एंजाइम्स क्या करता है? एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस. एंजाइम्स in some cases, enzymes can make chemical reactions million of times faster than it would have been without it. Substrate behind to the active sites of enzyme and is converted to the product. Look at here. This substrate bind with the active site of enzyme and form a product. Okay, and form a product. Once the product leave the active site, एक बार प्रोडक्ट निकल गया कहाँ से? एक्टिव साइट से. किसके एक्टिव साइट्स के? एंजाइम्स के. At that time, the enzyme is ready to attach new substrate and repeat the process. एंजाइम्स वहाँ से निकल जाएगा और रेडी रहेगा. किस लिए रेडी रहेगा? दूसरी प्रोसेस के लिए. And the lock and key model was first proposed in 1894. What is lock and key mechanism or what is lock and key model? In this model, an enzyme active site is a specific shape. Enzymes की जो active site रहती है वो एक specific shape की रहती है and only the substrate will fit into it like lock and key. It means that you can see that specific enzyme is a specific for specific substrate. Okay, so this model has now been updated and is called induced fit model. Okay, now we see the characteristics of enzymes. Enzymes possess
ग्रेट कैटालिटिक पावर, इसमें बहुत ज़्यादा कैटालिटिक पावर रहता है। ये एंजाइम्स क्या करता है तो एक्टिवेट द रेट ऑफ रिएक्शंस। एंजाइम्स और हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम्स और हाईली स्पेसिफिक and they function with only one reactant to produce specific product. Enzymes show varying degree of specificity. Of course, all these are the characteristics. Absolute specificity, where the enzyme react specifically with only one substrate. Stereospecificity is where the enzyme can detect the different optical isomer and react to only one type of the isomers. Enzymes have an optimum pH range within which the enzyme function is at its peak. जहाँ पे एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम पीएच रेंज रहती है कि उसमें क्या करेगा ये एंजाइम्स, फंक्शन एट इट्स पीक. Okay, now next character of enzyme is that the reaction specific enzyme. This enzyme, as the name suggests, react to specific reactions only. It means that here also the enzyme, specific enzyme is for specific substrate or specific reactions. Group specific enzyme are those that catalyze a group of substance that contains specific substance. यानी कुछ एंजाइम्स कैसे रहेंगे, ग्रुप स्पेसिफिक भी रहेंगे. The enzyme's activity can be controlled, but the activity of catalyst cannot be controlled. एंजाइम्स की एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन, सब एंजाइम्स क्या रहेंगे, प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बिकॉज सम प्रोटीन्स आर antibodies, some proteins are hormones, and some proteins are enzyme. You can see that all enzymes are proteins. Like proteins, enzymes can be coagulated by alcohol, heat, concentrated acid, and alkaline reagent. At high temperature, the rate of reaction is faster. Of course, the rate of reaction is faster. And the rate of reaction involving an enzyme is high at optimum temperature. Optimum temperature रहेगा तो rate of reactions involving an enzyme is high. कैसा रहेगा, high रहेगा. Okay, all these are the characteristics of enzymes. Thank you so much.